Hello everyone, welcome to this channel. On my previous video, I talked about our 7th cranial nerve, which is facial nerve. So if you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. Today I'm going to talk about our 8th cranial nerve, which is vestibulocochlear nerve. आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग में रहने वाला 8वां cranial nerve, जिसका नाम है vestibulocochlear nerve. ठीक है, तो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के बारे में बात करने से पहले आपको हमारे कान के बारे में थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो आप फोटो देख रहे हो, इस फोटो में आपको 3 पार्ट दिख रहा है. एक बाहर वाला मतलब आउटर ईयर, ठीक है, जो आप बाहर से देख सकते हो. एक बीच वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं मिडिल ईयर, जो आप नहीं देख सकते हो क्योंकि इसमें आपका कान का पर्दा आता है और बीच में कुछ कुछ हड्डी आती है. ठीक है, और इसके भी अंदर वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं इनर ईयर. इसमें बहुत कुछ ऑर्गन्स रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. दिस स्नेल लाइक और जलेबी लाइक स्ट्रक्चर, this is known as cochlea, and the rest of the part is known as vestibule. From vestibule few nerve fibers arises, these are known as vestibular nerve, and from this cochlea few nerve fibers arises which are known as cochlear nerve. Now vestibular and cochlear, both nerve fibers merges together and forms vestibulocochlear nerve. Okay, now after formation of vestibulocochlear nerve, this nerve enters into the skull cavity through these internal acoustic meatus. Okay, after entering inside of our skull cavity where our cerebrum, cerebellum, brainstem lies, what happens? This vestibulocochlear nerve enters inside of pons through the pontomedullary junction. I mean the junction between the pons and medulla oblongata. अब ये जो pons है, pons के अंदर में 2 तरह का न्यूक्लियस रहते हैं. एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, दूसरा कॉक्लियर न्यूक्लियस. वेस्टिबुलर न्यूक्लियस वेस्टिबुलर पार्ट को मैनेज करता है, कॉक्लियर न्यूक्लियस कॉक्लियर पार्ट को मैनेज करता है. ठीक है, तो अभी से मैं आगे आगे जो कुछ भी बोलूंगा बहुत टफ है. ठीक है, बहुत कठिन है. ये स्क्रिप्ट लिखने में मेरे को 3 दिन लग गया है. ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ है, मेरे लिए भी टफ है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ ही है. ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से समझाने के लिए. ये जो वेस्टिबुलर पार्ट है मतलब वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, ये मेनली काम करता है हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए. ठीक है, अब बॉडी का बैलेंस मतलब हम खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, मेरा बॉडी का किसी भी पोजीशन हो, ठीक है, हमेशा ये वेस्टिबुलर पार्ट एक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है. ठीक है, कैसे करता है यही हम आगे आगे बात करेंगे. ठीक है, दिस वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हैज 4 पार्ट. One is superior part, another is inferior part, one is medial part, another is lateral part. Okay, from the medial part and lateral part of vestibular nucleus, few fibers arises and goes downward towards spinal cord. Now I already talked about spinal cord in details in my earlier videos. You must check out those videos. Okay, now in this photo, as you can see, there is anterior funiculus or anterior column of spinal cord. As you can see, the anterior funiculus of right side and anterior funiculus of left side, and behind the funiculus there is white matter. Okay, now this white matter consists of few neurons of anteriorly which are known as lower motor neuron. तो राइट साइड का फाइबर्स राइट साइड का लोअर मोटर न्यूरन में जा रहा है और लेफ्ट साइड का फाइबर लेफ्ट साइड का लोअर मोटर न्यूरन में जा रहा है. बस इतना आप समझ गए. द फाइबर्स आर कमिंग फ्रॉम मीडियल पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, सप्लाइज आवर neck muscles, and the fibers are coming from the lateral part of the vestibular nucleus, supplies our all joints of presence in limb. Like limb means our upper limb, lower limb. So joints like shoulder joint, elbow joint, wrist joint, these carpometacarpal joints. Okay, interphalangeal joints, these, and few joints like our these knee joints, ankle joints, tarsometatarsal joints, intertarsal joints. Okay, now as you know, this vestibular part controls our balance. So obviously it will supply our neck muscles to control our balance of our head, like this way, that way, this way. Okay, it also supplies our joints of all limbs. Okay, so it controls our balance of our 4 limbs. If I am standing, I am sitting, I am hanging, whatever position, it controls our balance via supplying this lower motor neuron. This balance is very critical or very complicated part which is maintained by our cerebellum and our cerebrum. Okay, now the fibers which are arising from vestibular nucleus, few fibers goes inside of our cerebellum. How? As I already told about that cerebellum holds the brainstem via 3 peduncles. One is superior peduncle, middle peduncle and
inferior peduncle. Here is only inferior peduncle is very important. Okay. Now what happens? Few fibers arises from vestibular nucleus and enters inside of cerebellum via inferior peduncles, where the last lobe of cerebellum, which is known as flocculonodular lobe. I already talked about these lobes and entire cerebellum in my earlier videos. You can check out those videos. Now, in this flocculonodular lobe, there is a very special nucleus which is known as festigeal nucleus. Okay. Now, fibers which are entering inside of festigeal nucleus are mainly sensory fibers. Now, from this festigeal nucleus, few motor fibers arises and enters inside of vestibular nucleus. Vestibular nucleus is present in our pons. Okay. Now, above this nucleus, one structure is also present which is known as abducent nucleus, which is our sixth cranial nerve nucleus. Suppose this is vestibular nucleus of right side and this is vestibular nucleus of left side. Few fibers arising from right sided vestibular nucleus are directly entering into left sided abducens nucleus. Okay, and fibers from left sided vestibular nucleus entering into right sided abducent nucleus. Okay, just like crisscross connection. Okay, as you know that midbrain is situated above the pons. Okay, and in the midbrain there are two special nucleus. These are trochlear nucleus, I mean fourth cranial nerve, and oculomotor nucleus, I mean third cranial nerve. Okay, few fibers arises from right sided abducent nucleus and goes and enters into the midbrain and supplies opposite side of trochlear nucleus and oculomotor nucleus. These abducent nucleus, trochlear nucleus, oculomotor nucleus, these nucleus I already talked about in my earlier videos as per the cranial nerves. Now, our balance is also related with this nucleus. As you know, this nucleus, as you know, from this nucleus few nerve arises which supplies our extraocular muscles. Now, these extraocular muscles is also helps to maintain our balance. Okay, now this medial rectus, lateral rectus controls our horizontal balance, and the superior oblique, superior rectus, inferior oblique, inferior rectus, this muscle controls our vertical balance. Okay, अब इसी पार्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज क्या होता है, ये जो पॉन्स है, पॉन्स के बीच में एक पार्ट होता है जहां पर रहता है आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन. रेटिकुलर फॉर्मेशन कौन सा वाला पार्ट है? पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन. रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में मैंने पुराने वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ, नहीं जानते हो तो चेक कर सकते हो. तो कुछ फाइबर्स आपका ये पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन से आपका डायरेक्टली एब्डुसेंट न्यूक्लियस से कंट्रोल करता है, ठीक है. और एब्डुसेंट न्यूक्लियस जानते हो आपका लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करता है, ठीक है. इसका काम होता है जब हम घूमते हैं, ठीक है, मान लो ऐसे 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 मैं शक्तिमान जैसा घूम रहा हूँ, या जो बेली डांसर होता है, या जो बर्फ में जो डांस करते हैं ना बाहर में जो देखते हो, या फिर कोई भी डांस में अगर कोई ऐसे ऐसे घूमता है, तो घूमने के टाइम क्या होता है, ये जो हमारा आँख है, ये जो समान एक लेवल है हॉरिजॉन्टल बैलेंस, इसको मेंटेन करने में मदद करता है हमारा पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो आपका एब्डुसेंट न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है. As I said that this vestibular nucleus has four parts. One is superior, one is inferior, one other is medial, one other is lateral. Medial part and lateral part is gone. Now I am talking about superior part and inferior part. From these few fibers arises and goes directly upwards. Upwards it crosses the midbrain and enters into thalamus. In thalamus there is a special nucleus which is known as ventro-posteromedian nucleus. So these fibers enters into ventro-posteromedian nucleus of thalamus. Now from thalamus, from this nucleus few fibers arises and enters inside of internal capsule. Okay, I already talked about internal capsule in my earlier videos, you can check it. I already talked about thalamus in my earlier videos, you can check it. Now from this internal capsule fibers enters into corona radiata and spreads into our brain, I mean cerebrum. Now in cerebrum there is post-central gyrus. This is central sulcus, and the gyrus in front of it which is known as precentral gyrus.
and the posteriorly post central gyrus. I already talked about these things in my earlier videos. So this post central gyrus has lateral part, so these fibers enter into lateral part of post central gyrus and insular cortex and temporoparietal cortex. Okay, so that's all about vestibular pathway. कॉक्लियर के बारे में हम कल बनाएंगे किसी भी हालत में, तो फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए बाय।